Assalamu alaikum and welcome back. Today we are discussing Ted Hughes' famous poem, Full Moon and Little Frieda. So Frieda is his daughter, and he is writing this about her, about the nature, and all the things together. So this poem happens to be a complete poem that refers to a love of daughter and father, and a love of a child towards nature. वो एक बच्चे की जो नेचर से मोहब्बत है, क्योंकि बच्चे के लिए नेचुरल ऑब्जेक्ट्स बड़े एक यूनिक फिनोमिनास है। वो उसको फर्स्ट टाइम शायद देख रही है, फर्स्ट टाइम शायद वो इस काबिल हुई है कि वो अटर कर सके अपने मुंह से उन नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के नाम और अपनी एक्साइटमेंट उनको देख के। So a cool small evening shrunk to a dog bark and the clank of a bucket. So it was a cool and small evening, and this has become limited to only a barking by the dog and the clank of a bucket, like no other sound is heard. No other sound is audible. Only the barking of dogs somewhere, only a clanking of a bucket that somebody is carrying, because he'll refer to bucket later on in the same stanza. And you, little daughter Frida, you stand and you are listening to the sounds. So you're listening to all the sounds that are coming to your ear. सारी बातें, सारी आवाजें जो तुम्हें सुनाई दे रही हैं, तुम उन सबको सुन रही हो, महसूस कर रही हो, फील कर रही हो. A spider's web tends for the dew's touch. Now, this shows two things. First of all, it is evening time. It is the time when it is an evening of winter, when we feel that dew drops are coming after when it is dark. So when those drops touch the web of a spider, so the spider gets tensed and it shrinks back. तो इसी तरह वो अब ये रात चूंकि थोड़ी खुनकी वाली है, ऊपर से ड्यू पड़ रही है, तो स्पाइडर के जो वेब्स हैं आसपास दरख्तों पे, उन पे जब वो ड्यू ड्रॉप्स, शबनम के कतरे पड़ते हैं, तो थोड़ा श्रिंक होता है, टेंस हो जाता है कि पानी से गीला ना हो जाऊं, ठंड पहली जारी बात है, ऑब्जेक्ट के जानदार ऑब्जेक्ट है, ठंड लग सकती है ऑलरेडी, फिर इट मे ब्रेक जो उसका नेट है, वेब है, तो उस पर क्या हो रहा है बेसिकली, स्पाइडर्स जो वेब है वो टेंस हो जाता है. अब इसके एक और जो इंटरप्रिटेशन है, दैट कैन बी दिस कि when Frieda, since she is little and she is probably very new to the sounds of clanking of a bucket or barking of a dog, वो भी अचानक खामोशी में, अचानक कोई जब चीज हिलती है तो ज्यादा गूंज होती है, खामोशी में उस चीज का ज्यादा एक इफेक्ट आता है. सो इन द सेम वे जो क्लैंकिंग ऑफ अ बकेट है, ये साउंड्स उसको बड़ा वो यानी अलर्ट कर रही है, वो चौंक जाती है अचानक इनको देख के, एज इफ समवन इज टेंस्ड, क्योंकि उसने उस खामोशी को तोड़ा, उस सुकून को तोड़ा जिस सुकून में वो ऑलरेडी थी. A pale lifted, still and brimming mirror to tempt a star to a tremor. Tremor means to move, हिलना, terrible movement like an earthquake. जमीन के हिलने को भी ट्रेमर कहते हैं sometimes, वो जो झटके होते हैं. So here it is suggested that a pail lifted, वही पेल जिस बकेट के क्लैंक की बात हुई. So as if someone was putting water in that and now it is filled, और वो बंदा उसको उठा रहा है, और वो brimming यानी वो फुल ऊपर तक भरी हुई है. पाकिस्तानी माहौल होगा ना, पानी खत्म हो जाता है, बाहर से नलकों से भर के ला रहे हैं, तो वो भर के ला रहा है बेचारा कहीं से, रात को सर्दी में उसकी बेगम ने भेज दिया कि जाओ बाहर से पानी भर के लाओ, तो वो पानी लेके आ रहा है, बकेट भरी हुई है, और वो इतना प्यारा मंजर उस बकेट में लग रहा है कि वो जब हिलता है, ट्रेमर यानी वो जब चलने से बकेट हिलती है, तो वो जो उसके अंदर पानी के सर्कल्स बन रहे हैं, इवन स्टार भी, एक फर्स्ट स्टार जो उस रात को निकलता है, even that is willing to look itself in the shadow. So somebody among the present villagers may have lifted a pail of water which is so filled to the brim and so motionless, like at first motionless and then it moves,
that even the first star appearing in the sky in the evening can see itself clearly, as if it may be a mirror. वो अपने आप को देखना चाहेगा, यानी इतना नेचुरल सेटिंग बन जाती है कि हम अचानक कहीं से गुजरते हुए ना हमें फील हो कि यार चलो मैं यहाँ से भी अपने आप को शीशा देख लेता हूँ। तो जहां पॉसिबल जगह होती है, हम गाड़ी के शीशे में अपने आप को देख रहे होते हैं, किसी ऐसी विंडो के आगे देख रहे होते हैं जहां से हमें अपना अक्स नजर आता है, हम मोबाइल के कैमरास में अपने आप को देख रहे होते हैं। वी आर सो ऑब्सेस्ड विद आवरसेल्व्स। सो इसी तरह वो स्टार इतना अपनी खूबसूरती को देख के कॉन्शियस है कि इवन वो भी अपने आप को देखना चाह रहा है through that window, through that mirror, through that bucket जिसके अंदर पानी उसके अपने इमेज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। Now cows are going home. In the lane there, looping the hedges with the warm wreaths of grass. Now the number of cows going home in a queue, in a sequence, unlike human beings, their home is in a lane there. And as it is extremely cold outside, their breaths coming out of the mouth seem to freeze upon the hedges here in a form of rings and loops. अब यहाँ पे जो उनके ब्रेथ्स हैं, वो जिस तरह हम सर्दियों में सांस लेते हैं तो हमें एक फीलिंग सी आती है, हमें नजर आता है कि जैसे हवा या वो जो हम जिसे एक्सेल कर रहे हैं उसको हम देख सकते हैं फिजिकली, यानी वो धुआं सा जो हमारे मुंह से निकल रहा होता है, वो बेसिकली क्या है, वो उस सर्दी की शिद्दत का नतीजा है। और जानवरों के अंदर से, यानी उनके नथों से, इन काउज वगैरह, ये तो बहुत ज्यादा निकलता है। अब काउज जो है वो एक पूरी लेन में एक घर एक अपनी लेन में जो घर है उस तरफ जा रही हैं, पूरी अपनी एक कतार बनाए हुए फिर रही हैं। इंसानों की तरह नहीं कि इंसान जहां भी जाता है वक्त डाल देता है, ट्रैफिक में हम फंस के बैठ जाते हैं। गाड़ियां, इंसान, ये इनका हाल हमारी तालीम को रिफ्लेक्ट करता है सड़क के ऊपर, लेकिन जानवर हमेशा अपनी तहजीब दिखाते हैं। सो जानवर जो है वो हमेशा एक लाइन में चलते हैं, चींटियां एक लाइन में चलती हैं, परिंदे एक कतार में उठते हैं। सिमिलरली काउज जो है वो बिल्कुल एक खूबसूरत सी लेन में जा रही हैं, और उनके जो सर्दी में उनके मुंह से जो धुआं निकल रहा है वो आसपास उनके ऐसे इकट्ठे हो रहे हैं जैसे एक लूपिंग सर्कल्स बना रहा है, हार बना रहा है। तो वो उनके मुंह से निकलने वाला धुआं उनके आसपास ही खूबसूरत हारों की तरह लग रहा है। A dark river of blood, many boulders, balancing unspilled milk. अब ये जो रिवर जिसमें से गुजरते आ रहे हैं, यानी जिसको ये क्रॉस करती आ रही हैं भैंसें अपने घरों को जाने के लिए, सॉरी गायें, अब इन वो जो रिवर है वो इनके रेड कलर की वजह से ऐसा उसको उसने मेटाफोरिकली रिवर ऑफ ब्लड का, क्योंकि उसके अंदर रेड कलर्ड काउस थी। बोल्डर्स कहते हैं बड़े बड़ी रॉक्स, पत्थर, तो चूंकि बड़े हैवी जिस्म होते हैं काउस के, तो वो बड़े बड़े जिस्म वाली काउस अब वहां बड़े एहतियात से चलती आ रही हैं, क्योंकि उनके अंदर दूध भरा हुआ है जो कि उन्होंने अपने बच्चों को पिलाना है, या फिर जो उनके मालिकान हैं उन्होंने उसको निकालना है, दोहना है। सो वो बड़ा बैलेंस करते हुए चल रही हैं कि वो जो मिल्क है हम उसे गिरा ना दें, वो स्पिल ना हो जाए, खराब ना हो जाए। सो दे आर टेकिंग वेरी गुड केयर ऑफ देयर बिलोंगिंग। सो यहाँ पे जो cows हैं, they are referred to as someone who is taking care of their belongings in a proper way. So यहाँ पे we come to know कि अचानक आवाज आती है, moon, you cry suddenly, moon, moon, 3 दफा वो रिपीट करती है फ्रीडा, and she's looking at the moon, and it may have two interpretations too. जो ज्यादा प्लॉजिबल है वो ये कि वाकई वो चांद को देख रही है, जो कि चांद एक बड़ा यूनिक ऑब्जेक्ट है उसके लिए, बहुत कम देखा उसने फुल मून। नॉर्मली वी नो कि इंग्लैंड में, अमेरिकन एंड इंग्लिश कंट्रीज, यहाँ पे जो वेदर है नॉर्मली क्लाउडी होता है। चांद जो 14th का चांद है आपको कम ही नजर आता होगा। सो एंड शी इज वेरी यंग, टाइनी, जिसने भी बोलना शुरू किया, तो दिस इज वेरी यूनिक फिनोमेना फॉर हर कि वो उसको देखती है और अचानक चीखती है कि चांद चांद चांद, क्योंकि उसने नाम सुना हुआ है। ये भी बड़ा एक अजीब कॉन्सेप्ट है कि माएँ हमेशा कहती हैं चंदा मामू। माएँ कभी भी बच्चों को नहीं सिखाती कि ये चंदा चाचू भी हो सकता है, ये चंदा ताया भी हो सकता है, हमेशा चंदा मामू ही रहेगा। सो वो भी सिल्विया प्लैथ ने सिखाया होगा कि ये चंदा मामू है तुम्हारे। सो वो बोली अचानक चंदा चंदा या चांद, मून, व्हाटएवर।
So, oh my little daughter Frieda, you're so much wonderstruck at the beauty of this comprehensive scene of nature. And when the moon rose up, you suddenly cried, moon, 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 and it was the height of your exclamation, your joy over nature. And this may be referred to her father, since she's watching her father too, and she may be motion struck by looking at her father, and she may have cried moon, metaphorically referring to him. But most probably she is referring to the real moon that is there up in the sky. The moon has stepped back, like an artist gazing amazed at a work that points at him amazed. So the moon stepped back a little to notice and enjoy the beauty it has created. Like an artist who steps back a little after completing his portrait in order to enjoy the beauty of his accomplished work. So the very moon seems to have been amazed at the beauty it has created itself. यानी उसकी प्रेजेंस से फ्रीडा के अंदर इमोशंस आए, वो बोली, तो चांद भी एक आर्टिस्ट की तरह एक दंग रह गया अपने ही क्रिएशन को देख के, क्योंकि वो जो उसने 3 दफा मून कहा, वो मून को देख के कहा. So as if she was the creation, moon was the creator, and moon was motion struck to look at the beauty of those words coming out of the mouth of a tiny girl. So she was so engrossed in that, even that made moon focus on her, like how cute and how beautiful or how darling she is, कि वो इतने प्यार से उसका नाम ले रही है, उसको बुला रही है. So चांद भी एक तरह से शर्मा जाता है. So this is a magnificent poem. It is a poem that reminds us of Wordsworth's nature poems. We find the same love of nature expressed here by the poet. The poet in this poem, along with his daughter Frieda, he is busy in an evening loitering in a rural area, maybe near the riverside, by the bank of the river. So as it is a time of evening, cattle are going to the village enclosures or their homes after gazing outside in the fields and meadows. Now the cows are returning to their home. They are red, and their readiness, like the red color, is making the water of the nearby flowing river red. Like their color makes it red. Suddenly, इसलिए नहीं कि वो कलर छोड़ रही हैं, लाइक उनके कलर को तशबीह दी गई कि इतनी ज्यादा काउज हैं कि ऐसा लग रहा है कि पानी सुर्ख हो गया. Suddenly, full moon rises in the sky, and Frieda, who had not been impressed by the scene of the returning cows, is now suddenly impressed by the rising moon, and she exclaims with joy, moon, moon, moon. Now here, writer tells that there were so many beautiful things in nature. It was night, it was starry night, और stars भी थे, cows भी थी, दरख्त भी थे, पानी भी था, दरिया भी था, और एक खुनकी भी थी. लेकिन जो इम्प्रेशन मून ने डाला फ्रीडा पे, so that was the best of all, कि वो उसने सबको इग्नोर किया, but she was happy at the presence of moon. So this is a very small, easy and important poem by Ted Hughes that is about his love for his daughter and his daughter's love for nature. Thank you.